When the world's biggest crypto figure CZ visits Pakistan, it's not just a photo op. Millions of Pakistanis are trading cryptocurrency, unregulated, untaxed, and highly volatile. Today, we will explore CZ's role, Binance involvement, Pakistan's proposed crypto tax, and its comparison with India, show potential GDP gains, and even discuss risks like money laundering. कुछ माहरीन का मानना है कि पाकिस्तान के पास 20 से 30 बिलियन डॉलर्स के दरमियान क्रिप्टो एसेट्स हैं and trading could one day reach $300 billion, almost the size of Pakistan's $400 billion GDP. This is massive and too big to ignore. CZ, Changpeng Zhao, doesn't control Bitcoin itself, but the thing he controls is global crypto liquidity. He decides which market gets deep liquidity, what rules should exchange follow, and which coin thrives. You know what will happen if Pakistan collaborates with CZ/Binance. They will help the regulators set clear rules. They can help the government to collect withholding taxes where possible. Binance can provide the government formal reporting, and most importantly, they can help to keep the liquidity high while formalizing the market. ज़्यादातर क्रिप्टो ट्रेडिंग पाकिस्तान में इनफॉर्मली की जाती है. फ्रीलांसर्स और रेमिटेंसेस के थ्रू जो पैसा आता है, या even retail investors operate off bank or using peer-to-peer technique. And the result of this, number one, fragmented liquidity, meaning instead of one big river of money, Pakistan's market is split into thousands of small streams. And number two, high volatility. That is, low liquidity turns small trades into high price shocks. That is why cryptocurrency feels extra risky in informal markets. The third and the most important in Pakistan's perspective is lost government revenue. The government doesn't lose the money because crypto exists. Government loses the money because it exists outside the system. CZ को पाकिस्तान में लाना, बाइनेंस के साथ एग्रीमेंट साइन करना और अपनी क्रिप्टो मार्केट्स को फॉर्मलाइज करना, इन सब के पीछे क्या मकसद है? गवर्नमेंट चाहती है कि क्रिप्टो को टैक्स किया जाए, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल टैक्स सिस्टम नहीं है. लेकिन क्रिप्टो को टैक्स करने के कुछ प्रपोज्ड आइडिया जरूर हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं. आई विल टॉक अबाउट मोस्ट डिस्कस्ड आइडिया, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि 15% कैपिटल गेन्स को टैक्स किया जाए. जिस तरह आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बेचते हैं और जितना आपको गेन होता है आपकी बाइंग और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, उसके ऊपर आपको टैक्स किया जाता है. इसी तरह गवर्नमेंट आपकी क्रिप्टो की बाइंग और सेलिंग प्राइस पर आपको 15% टैक्स करेगी. दिस इज नंबर वन. उसके बाद गवर्नमेंट आपको 5% विद होल्डिंग टैक्सेस भी चार्ज कर सकती है अगर आप रेगुलेटेड एक्सचेंजेस के थ्रू अपनी क्रिप्टो अब्रॉड ट्रांसफर कर रहे हैं. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर विल बी अ 10% टैक्स ऑन इनकैशमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिटकॉइंस को बेचकर पीकेआर लेते हैं तो जितने पीकेआर लेंगे उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा. यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि टैक्स ऑन इनकैशमेंट और कैपिटल गेन टैक्सेस दो डिफरेंट चीजें हैं. कैपिटल गेन टैक्सेस आपके प्रॉफिट्स पर टैक्सेस हैं. अगर आपने 10,000 के कॉइन्स लिए और 15,000 के बेचे तो $5,000 का जो आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा. ये कैपिटल गेन टैक्स है. और टैक्स ऑन इनकैशमेंट आपके प्रॉफिट्स पर डिपेंड नहीं करता. अगर आपने बाइनेंस से फॉर एग्जांपल $5,000 पीकेआर में कन्वर्ट कराए तो जितनी भी करेंसी आपके अकाउंट में आएगी आपको उसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ेगा. दिस इज टैक्स ऑन इनकैशमेंट. इस सब में बाइनेंस का क्या रोल होगा? बाइनेंस अपना किरदार दो तरह से अदा कर सकता है. नंबर वन, वो एक विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइनेंस पाकिस्तान से बाइनेंस सिंगापुर में अपनी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करते हैं तो बाइनेंस पाकिस्तान गवर्नमेंट के कहने पर 5% टैक्स को विद होल्ड कर लेगा आपकी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर. और दूसरा, बाइनेंस एक रिपोर्टिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, मीनिंग दे विल हेल्प एफपीआर टू ट्रैक क्रिप्टो फ्लोज. One concern is that only 5% withholding taxes on cryptocurrency transfer abroad might make it attractive for laundering. For example, someone has 10 million PKR and he cannot explain the source of income to FPR. What will he do? He will buy crypto coins using that money and then he will transfer that crypto coins to abroad with only 5% taxes applicable on it. In this way, he will bypass rest of the local taxes. This is a loophole if not combined with mandatory reporting, audits and penalties. Let's compare it with India. India taxes crypto at flat 30% plus 1% TDS on every transaction, and you cannot offset your losses with any other head of income. On the other hand, Pakistan's draft 15% taxes on profit, partial withholding and potential encashment tax. This is more investment friendly approach if implemented properly. According to the market estimates, पाकिस्तान की GDP $400 बिलियन के अराउंड है और पाकिस्तान के पास 20 से 30 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो एसेट्स हैं जिसकी पोटेंशियल ग्रोथ $300 बिलियन तक है. इवन गवर्नमेंट अगर 10 से 15% टैक्सेस प्रॉफिट के ऊपर लगाती है
तो ये गवर्नमेंट के लिए बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, जिसको गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और फिनटेक ग्रोथ के ऊपर लगा सकती है. Some experts say that proper regulation could boost the GDP growth by 0.5 to 1% annually. This could help create thousands of high-tech jobs and keep capital inside Pakistan instead of offshore, which is the biggest problem of Pakistan. यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ओवर टैक्सेशन या क्रिप्टो को बैन करने से क्या नुकसानात हो सकते हैं. सरमायाकार बैरून मुल्क चले जाएंगे, फ्रेगमेंटेड लिक्विडिटी होगी और इनफॉर्मल मार्केट्स में इजाफा होगा. The key is to maintain the balance between enforcing taxes and protecting and encouraging users. CZ's visit is a signal. Pakistan could formalize its crypto market, collect real tax revenue, and stimulate its GDP growth. But missteps could encourage money laundering and offshore flows. What do you think? Should Pakistan embrace crypto formally with smart taxes or keep it mostly free? Comments below.